everyone. I welcome you all again on the YouTube channel of TechUpGate classes. And this is all about me. And we started the subject which is machining and the machine tool operations. Okay. So this is the same subject, same syllabus of this one is also in the PI, Production Industrial Engineering. So both students like this is I started for the mechanical, but now PI students can also join this subject. Okay. So in the last lecture, which is lecture number 8, we discussed about the mechanics and the forces in the turning operations, and we saw the conversion formulas for how, because whatever the formula that previously we have derived for the orthogonal cutting only, and if we have to go for the numerical problem, or we have to go for the calculation part, then we have to convert these turning formulas into the orthogonal. Okay, so that we saw, and we also saw some of the numerical problems. Okay, and one in the last basically I in the last lecture basically I gave you 4 numerical problems in the homework. Okay, so among them 19, 20, and the 21 that I have replied in the previous video in the comment box, and for the last problem that was based on the turning, so that we will start with that. So in the lecture number 9 today, we start with that problem, and we'll discuss our main topic of today, that is total energy consumption and the specific cutting energy and specific cutting pressure. Okay, by the way, both terms are different, and there are some similarities also there. So by the way, both terms are different. Okay, it's not like I have written oblique, so it's same. By the way, there is some similarity that we will see today. Okay, so let's start. So first, the problem that is in orthogonal turning of a bar of 100 mm diameter. So the D, that is diameter, we are assuming that is 100 mm. Okay, and with a feed of 0.25 mm per revolution. So the feed is given to you, that is 0.25 mm per revolution. Okay, this exercise is good that when you are reading the problem, that time you are writing the what the data is given to you. Okay, next is the depth of cut is 4 mm, so small d value is given, that is 4 mm, and the cutting velocity, that is v, is 90 meter per minute. Okay, it is observed that now the condition is, one condition is given to you, that it is observed that the main tangential cutting force, देखिए ऑर्थोगोनल टर्निंग की बात हो रही है, ठीक है, तो मेन टेंजेंशियल कटिंग फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया था लास्ट टाइम हमने, by the fz. Okay, and if we will convert this into the orthogonal cutting, then this value will be completely equal to fc. Okay, now this fz is perpendicular to the frictional force acting at the tool chip interface. Now this is the condition is given to you. पहले देख लेते हैं और क्या क्या given है, then we'll proceed for the numerical. And then the main tangential cutting force is 1500 Newton. So the value of Fz is given to you, or Fc we can say, because हमें anyhow orthogonal के formulas ही use करना है, so I'm writing in that only. So Fc is given to you. So first is what we have to find out, the orthogonal rate angle of the cutting tool in degree. Okay, तो देखिए जो आपको data given है उसके basis पे हम diagram draw कर लेते हैं. So when you will draw this diagram, okay, this is a workpiece. Okay, this is tool, and this is chip. Okay, now rake angle is what? Rake angle is this one, मतलब आपका जो vertical के साथ horizontal से vertical जब हम draw करते हैं, with this vertical, this rake face जो है, this angle is alpha. We have seen so many times this one. Now when you see this one, that what the condition is given to you, that it is observed that the main tangential cutting force क्या होता है, that is Fc. Okay, now this Fc is in this direction. वैसे भी आपका जो Fc होता है in the orthogonal cutting, that is the main cutting force, and that is nothing but it's horizontal. Okay, means जिस डायरेक्शन में आपका टूल मूव कर रहा है, with जिस डायरेक्शन में आपकी कटिंग हो रही है,
in that direction we are holding a tool, so that is nothing, not only holding but we are pushing it, okay, in that direction. So this is Fc, that is a main cutting force, okay, this is Fc. And what is the next is, that is friction force. So the friction force, the chip is flowing in this direction, and this is basically, this face is nothing but it is an interface of the tool and the chip. So that when the chip is flowing upward, the frictional force will be in the downward direction. So this is F, this is F, okay. Now what is mentioned, that it is observed that main cutting force is perpendicular to the frictional force. So this is the main cutting force and this is F. So now if you will see in this position, then there will be some angle. So what we have to do is, either we can rotate this one, and so this will be 90-degree. But usually what we are doing is, we are keeping in mind that whatever the operation we are doing, we are keeping this Fc horizontal only, okay. तो हम क्या करते हैं कि F जो है इसको हम इस डायरेक्शन में लेते हैं. सो उसके लिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ. सो नाउ F को मैं यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ. Why I am taking over here? Because now this angle will be 90-degree. Now this angle will be 90-degree. If this angle will be 90, then अल्फा क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया होगा. तो अल्फा तो आप मेजर ही यहाँ से कर रहे हो ना, यहाँ से कर रहे हो वर्टिकल से. तो नाउ अल्फा विल बिकम 0-degree. तो अल्फा क्या हो गया आपका 0-degree, मतलब रेक एंगल कितना हो गया 0-degree. ठीक है. तो पूछा गया है कि ऑर्थोगोनल रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल इन डिग्री इज 0 है रेक एंगल. ठीक है. सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस मोर इन दैट. तो देखिए ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें विदाउट टेकिंग द कैलकुलेटर, जो कंसेप्ट थे हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसेप्ट वी गेट द आंसर. ओके. 2 मार्क्स का है. देखिए इसमें ये कॉमन डेटा में है. तो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं. डेटा सेम है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रीडिंग दिस पार्ट. द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट द टूल चिप इंटरफेस इन न्यूटन. इसी में दिखा देता हूं मैं आपको. देखिए normal force, like if this is the F, okay, ये आपका F है frictional force. Now perpendicular to that is the normal force in this direction. ठीक है. This is N, okay. Now if this is N, then this Fc is also in this direction. So it means that both will be the same, because now both are perpendicular to the F. So if both will be same, then value of Fc will be equals to N, and value of Fc is given to you, that is 1500 Newton. So this will be 1500 Newton. Okay. So what is asking, the normal force acting at the tool chip interface. So the value of N is, okay, in Newton. So that will be equals to Fc, and Fc is how much? That is 1500 Newton. Okay. So this will be the answer. देखिए दोनों क्वेश्चंस जो थे कॉमन डेटा में, आपके इन दोनों प्रॉब्लम्स को विदाउट टेकिंग द कैलकुलेटर वी हैव कंप्लीटेड. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स दैट यू शुड गो फॉर दीज न्यूमेरिकल, बिकॉज ये एटलीस्ट टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए. बिकॉज इफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज यू आर फेसिंग, देन डेफिनेटली यू विल गेट इट 4 मार्क्स इफ यू नो द कंसेप्ट. ओके. अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, देन डेफिनेटली यू हैव टू लीव दिस. फाइन. Okay, so let's come to the main topic, which is which we have to study today. So the total energy consumption concept. Okay, now in some of the book, basically this total, on behalf of this total energy, this is written like total power consumption. Okay, and sometimes it is total heat dissipation or heat consumption is also written. So all the terms are same only. Okay, if power and the heat is just like we are calculating in the watt, and energy is nothing but we are calculating in means joule per unit time. So both the values is same only. Okay. Now the total energy dissipation is, फर्स्ट देखिए टोटल एनर्जी डिसिपेशन में आपको दो तरीके से समझाता हूँ. फर्स्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड सेकंड बाय यूजिंग द ग्राफ. ओके. नाउ दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो फॉर्मूले में क्या है कि हम लोग बहुत सारी चीजें कंस्टेंट मान के चलते हैं. हमने वो पहले ही मान ली हैं जब हम मर्चेंट सर्कल डायग्राम बना रहे थे. ठीक है. क्योंकि हमने हमेशा एफसी को हॉरिजॉन्टल रखा. चिप जो है दैट इज ऑलवेज फ्लोइंग, ऑब्वियसली दैट इज फ्लोइंग अलोंग विद द rake face, so we are keeping this force Fs, that is we are assuming that this is again assumption that always the
material will remove from the shear zone only because of the plastic deformation. So there is some constraint, but when you will see the actual thing, there will be something different. Okay, so now first we are taking the formula part, and then we'll go for the graph. Okay, so for that I'm taking this figure. देखिए ये आपका वर्क पीस है, ठीक है। Okay, now in this workpiece, we are keeping this single point cutting tool over here. Okay, and the chip is flowing in this direction. Fine. Now this is the tool, and this is chip, and this is workpiece. Okay. Now, first of all, there are two things we are going to discuss. First is the velocity, and the second is the force. So first is the velocity. Now the velocity is we are keeping this single point cutting tool over here, and we are moving in horizontal direction. So this is the direction. So this is in this direction we are maintaining the cutting velocity, which is v. Okay. When there is a deformation due to which the material is removed from the workpiece surface, so that deformation is nothing but it occurs in the shear zone. So this is the shear zone. So in this there is a shear velocity. So this is Vs. Next is the chip. Chip is flowing over the rake face. So chip is flowing in this direction. Okay. So this is velocity is Vc, which is a chip velocity. Now we are looking for the forces. That what are the forces which is affiliated. Now we are keeping the single point cutting tool. This is the single point cutting tool, and I'm pushing a force. I'm keeping it. No doubt it is posted, holded at the tool post, but I'm pushing it in this direction. Because of that, the material can be removed or the crank can be initiated. So for that, we are taking this horizontal force, which is in this direction. In this direction, okay. So this is Fc, horizontal force, which is because of that the cutting is takes place. So crank is initiated basically. Okay, so if the crank is not initiated, then there will be no propagation of the crank. So crank, for the initiation of the cranks we need this Fc. Okay, so this is Fc, which is horizontal, and for once the crank is initiated, now it will propagate in the shear deformation zone. So this is in this direction. There is a Fs, that is a shear force. Okay, by the way, these things we have already seen in the merchant circle diagram. Okay, now the chip is flowing over the tool face interface, tool chip interface. So this is a tool chip interface, and when the chip is flowing in this direction upward, the friction force at this interface will be in the downward direction. Okay, so this is F. Okay, so now there are three things we have to look into. First is forces with respect to the velocity. Now if we'll say if this is our horizontal component, then this horizontal components are, first is Fc, and along with the velocity is V. We are keeping this shear force, shear in this direction, shear deformation. So along with that, Fs is the shear force and Vs is the shear velocity. Okay, in this direction there is a chip is moving. So frictional force, the cutting, sorry, chip velocity is in this direction, and the frictional force will be in this direction. By the way, both are the vector quantities, so we can change the direction of that, because it won't affect the main the value of the component. Okay, it won't affect the value, it will just change the sign only. So now total power. So the main is, if देखिए अगर आपका FC है तो ही आपका F और FS है, अगर आपका FC नहीं है तो F और FS भी नहीं होता, क्योंकि अगर आपका क्रेक ही इनिशिएट नहीं होता तो प्रोपगेट कहां से होता, और अगर प्रोपगेट नहीं होता तो फिर फ्लो, चिप फ्लो कहां से होती, ठीक है। तो चिप फ्लो होना, shear deformation होना, that is mainly due to the presence of the Fc, that is a cutting force. So what we are assuming here is that mainly this total power or the total energy is initiated by the main cutting force only. Okay, so the total energy per unit time will be equals to Fc, which is a cutting force, main cutting force, and the cutting velocity. This is equation number 1. Total energy per unit time in cutting. Okay, total energy
per unit time in shearing action or in shearing. So that will be equals to Fs into Vs. This is equation number 2. Okay. Then the total energy per unit time in friction will be equals to F into Vc. Okay. So this is equation number 3. Now, as I said that because of this Fc only, there is a presence of Fs and F. Okay. So now what we have to do, this is the total power which is now dissipated first in the Fs, which is shearing, and then in the friction. So the total power Fc into V will be equals to the energy dissipation in the shearing zone plus energy dissipation in the frictional zone. Okay. So this will be your total energy consumption per unit time. Okay. So this is okay, this is your main equation, so you can write it into the synopsis part. Okay. So this is the total energy. This amount of the energy now is dissipated in the shearing zone, rest amount is dissipated in the friction zone. Again, as I said कि ये क्या है कि आपके आपके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, आपकी कुछ वैल्यूज हैं एंड यू आर एज्यूम समथिंग. ओके. तो this value is not completely equal but this value will be approximate equal. Okay, like 99% हो सकता है, ठीक है, but it will not be 100%. ठीक है. So there is no need to worry. इतना में 99 भी हो जाता है तो अपना काम तो हो रहा है ना. ठीक है. So this is the total energy consumption. Now just I'm taking a graph through which I'm also explaining this part. Sorry. Okay. So now this is horizontal, which is the x-axis, and this is the y-axis. Okay. Now on the y-axis, we are assuming that energy consumption per unit time. Okay. And on x-axis, we are taking cutting speed or cutting velocity. Okay. Now we are also taking three things, three values of cutting speed we are assuming over here, and these are like first is low, and then it's moderate or medium, then it is high. Okay. So now I'm drawing three diagrams. So first is like just assume that this one is nothing but this is the total heat supplied. Okay. Total heat which is available. Okay. So this is the total heat or total energy available, energy per unit time available. Okay. Then I'm drawing this diagram. So this is first is this one, second is okay. Now थोड़ा मुझे इसको नीचे बनाना है. ठीक है. हालांकि वो वहीं बन गया वापस. एक्चुअली क्या है कि मैं इन दोनों को सेम बनाना चाह रहा था, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन. ठीक है. थोड़ा बहुत सेम है. ठीक है. एक्चुअली क्या है कि थोड़ा स्टिक हो गया मार्कर, तो दैट विल बी गोइंग अगेन एंड अगेन देयर ओनली. सो देखिए, बट कंसेप्ट इज मेन इंपॉर्टेंट. नाउ दिस पार्ट व्हेन वी आर एज्यूमिंग देयर इज अ लो स्पीड, थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं मैं इसको. व्हेन वी आर ओके, फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, दिस वन दैट आपका ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो कर्व है, फर्स्ट लाइक दिस बिलो, जो आपका ये वाले कर्व है, इससे नीचे वाला जो पार्ट है, इसको मैं फर्स्ट
से represent कर देता हूँ. This is second portion and this is third portion. Okay. Now this first portion, which is this complete region. Okay. This complete region is showing the percentage of total energy dissipation, energy dissipated in chip. Okay. This is this portion, second portion, this complete zone. Okay. This is showing the percentage of total energy dissipated in tool. Okay. And the third one, this part, this is showing the percentage of total energy dissipated in workpiece. Okay, means the amount of the energy that taken, this much first region, this amount of the energy, this is taken by the chip. Along with that, this amount of the energy which is taken by the tool during the machining operation, and this amount of the energy now this has been taken by the workpiece, means that is captured, means that is kept by the workpiece. Okay, as ऐसा नहीं कह सकते कि the material which is removed, because now that is transferred to the chip only. Okay, so now what I was saying is we are taking this one, that when there is a low speed, this much amount, this three things that we are taking is first this one, second T will be here, okay, and third one will be here. So these are basically nothing but this is a low speed, this is moderate speed, and this is high speed. Okay, now when we are working at a low speed, that time this much amount of the energy, is the energy dissipated in the chip. It means that and this much amount of the energy is dissipated in the tool, and this much amount of the energy is dissipated in the workpiece. So when you will see the percentage, then this will be the 30%, this is 30%, this is 35%, and this is 35%. Okay, now when you will increase the speed, you will reach to the moderate speed. That time now you can see that percentage energy dissipation is increased in the chip. Okay, and that has been decreased in the workpiece and the tool. Okay, so now at the moderate speed this will be 50%. Okay, and for the tool and the chip it will be 25%. Okay, now when you will increase the speed and this speed will be high, that time the energy which is dissipated along with the chip is become 80%, and the amount of the rest will be transferred to the workpiece and the tool, and that is 10%. Okay, so that complete become 100%. So what we have to do is we have to first we have to keep the things in mind that when we work for the high speed, that time most of the energy will be dissipated along with the chips, and chip is what? Chip is a scrap. So we have to keep in mind these things, and we have to go for the machining purpose. Okay, so so next is the common data problem. This problem is basically 3 questions were asked in that. Okay, so 3 questions means 6 number. Okay, so let's take it. So first is in an orthogonal machining operation. In an orthogonal machining operation, the uncut chip thickness means the value of T is given to you. So this is 0.50 mm. Okay, the cutting speed, which is 20 meter per minute, means which is V, and that is given, that is 20 meter per minute. Rake angle is alpha, which is a 15 degrees given to you. Okay, width of cut, that is B, we are representing with the B, that is 5 mm. Okay, the chip thickness, that is value of TC is given to you, that is 0.70 mm. Okay, Ft, which is thrust force, which is a Ft, that is given to you, that is 200 Newton. Okay, cutting force, which is Fc, that is 1200 Newton. Okay, assume the machine theory, and the first thing that we have to calculate is, first question में जो हमें calculate करना है, that is value of shear angle and the shear strain. तो देखिए first shear
एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो शेयर एंगल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है दैट इज tan phi इक्वल्स टू r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha, ठीक है। now alpha is the rake angle, so that is given to you, but r is the chip thickness ratio which is not given to you, but for the r we have the formula that is r equal to t by tc, ठीक है, क्योंकि ये दो वैल्यू हमें गिवन है। by the way lc by l is also available and vc by v is also available, but these value are given to us, so we are using that one, okay। so t is the uncut chip thickness which is given to you, and tc is the chip thickness which is also given to you, so this is 0.50 upon 0.70. so when you will calculate it, I have also calculated, so when you will calculate it, this will be 0.7143, ठीक है, this r। now what you have to do is just put the value of r over here and get the value of phi, so tan phi will be equals to 0.7143 into cos alpha, alpha is how much, 15 degree, ठीक है, upon 1 minus r that is 0.7143 into sin alpha, that is alpha again 15 degree, so when you will calculate it, okay, so it's my habit, so this is numerator, this will be 6.6899, in the denominator it will be 0.8151, okay, so when you will calculate this we will get the value of that is 0.8464, and this value is of tan phi, so from here you will get the value of phi, that when you will tan inverse, so this value what I am getting is that is 40.20, ठीक है। ये तो पहली वैल्यू हो गई शेयर एंगल की, देखिए 30.3 एंड 40, मतलब या तो सी ऑप्शन हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है। देखिए अगर स्ट्रेन रेट शेयर स्ट्रेन की वैल्यू सेम रहती तो हम लोग दोनों में से एक आंसर लगा सकते थे, बट इन्होंने क्या किया है कि फाई की वैल्यू को सेम दे दिया है, सो डेफिनेटली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन, ओके। So okay, let's shear strain. Shear strain is what we representing with the gamma s. So gamma s is what, that is tan phi plus cot phi plus tan phi minus alpha, ठीक है। तो phi आपने कैलकुलेट किया है अभी and alpha is already given to you, so just get the value. now देखिए cot phi आप सर्च करेंगे आप कैलकुलेटर में और आप पूछेंगे सर cot phi नहीं दिया है, क्योंकि जो पहली बार कैलकुलेटर यूज करते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उनके लिए नहीं दिया है तो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, ठीक है। सो दिस इज 10, मैंने उसको 1/10 कर दिया है, एंड 10 phi की वैल्यू है दैट इज 40.2 minus 15, ओके। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस वन you will get the value that is 1.652, okay, but इसमें up to 2 digit ही पूछा है, so that I'm taking up to 2 only, okay। so this will be the answer and phi is this one, okay। so option will be 1.65, so option will be D, ठीक है, आया समझ में। so let's move to the next one, again data same is, so I'm not changing, I'm not reading that one again। so next question is coefficient of friction at the tool chip interface, so the value of mu we have to find out, and how to find out the mu means what are the formula that is available to you, that is tan beta, ठीक है। तो बीटा के लिए देखिए बीटा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम 2 प्लस ये वाला जो मैं ऊपर लिख देता हूँ, दैट इज 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं तो देखिए फाई हमने अभी कैलकुलेट किया ही है, अल्फा हमने गिवन है, तो यहाँ से हम लोग बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमें मिल जाएगा। अगर वो हमें मिल जाता है तो हम म्यू बराबर tan बीटा कर देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए हमने पहले प्रॉब्लम की थी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंड आप ऐसे करिए, ठीक है, आप ऐसे करिएगा और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू जस्ट राइट योर आंसर into the comment box, okay। so why, whether it's right or wrong or what value you are getting, I will tell you। so देखिए हमने एक प्रॉब्लम पहले कर चुके हैं, and in that problem the value of beta is just approximately twice what of the value of beta basically, okay। तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि this formula is nothing but you are getting from the assumptions, okay। so better if other things is available to you, first you go for that। other things means जिससे हमने बेसिक से फॉर्मूले स्टार्ट किए हैं, अगर आप बेसिक से फॉर्मूले देखेंगे तो यहाँ पे आपको फोर्सेस गिवन है, थ्रस्ट फोर्स गिवन है, एफटी गिवन है और एफसी गिवन है। सो इफ द फोर्सेस इज गिवन टू यू देन गो फॉर द फोर्सेस,
ओके मीन्स फोर्सेस मतलब कि म्यू की अदर टर्म्स क्या हो सकती हैं, पहला तो टेन बीटा हो सकता है, उसके अलावा एफ बाई एन से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ क्या होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इन टर्म्स ऑफ एफ सी और एफ टी, दैट विल बी एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, अपॉन एफ सी कॉस ऑफ अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा, ठीक है। तो नाउ अल्फा इज गिवन टू यू, एफ सी इज गिवन टू यू, एफ टी इज गिवन टू यू। तो हमें जो चीजें गिवन है, मतलब हमें जो डेटा ऑलरेडी गिवन है, तो why are you not getting the value, why are you not calculating the value for which the data is already available to you, means आप कभी वो फॉर्मूला मत लगाइए जिससे कि आपको कैलकुलेट पहले वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ रही है, देन नाउ यू आर अगेन यूटिलाइजिंग दीज वैल्यूज। ओके, इसमें क्या है, हमने फाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, हमें गिवन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, सो नाउ वी आर यूजिंग दिस वन, and as I said, आपका जो भी इससे आंसर आता है प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, so I will tell you, okay, what I am getting and whether whatever the answer that we are getting, whether it's correct or wrong, okay, whether it's right or wrong. So the mu we'll get it from here, so this F will be equal to FC. FC is 1200 into sine alpha is how much, this is 15 degree, okay, plus FT, that is 200 into cos 15, ठीक है, upon FC, that is again 1200 into cos of alpha, that is 15 degree, ठीक है, minus FT, that is 200 into sine 15 degree, ठीक है। Now when you will calculate it, the value that I am getting is, okay, so again I am calculating this numerator part first, okay, so this is 503.768, okay, and the denominator part will be 1107.347, okay, so when you will calculate it, this value will be equals to 0.4549, okay, आपको up to 2 digit तक find out करना है, so this will be, देखिए ये this is greater than ठीक है, तो ये this will become, अगर आप 3 digit तक लेंगे इसको तो this will be 455, and up to 2 digit तक लेंगे then it will become 0.46, okay, so the option will be B, ठीक है, easy है। next is again data is same, the percentage of total energy dissipated due to friction at tool chip interface। नाउ देखिए परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है एट द मतलब परसेंटेज फाइंड आउट करना है, बट एज आई सेड कि टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, टोटल एनर्जी जो डिसिपेटेड था दैट वाज एफ सी इनटू वी, ठीक है, एफ सी इनटू वी। नाउ आपका जो फ्रिक्शन में जो आपका एनर्जी डिसिपेशन होता है दैट इज एफ इनटू वी सी, ठीक है। नाउ टोटल एनर्जी कितना है, दैट इज एफ सी इनटू वी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस। आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि कितनी एनर्जी, टोटल में से कितनी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो रही है ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो टोटल एनर्जी व्हिच इज डिसिपेटेड थ्रू द फ्रिक्शन दैट इज एफ इनटू वी सी, and the total energy which is supplied that is fc into v, and percentage find out karna hai, so we will get this 100, okay, so that will whatever the value that will get that will be percentage। now देख लीजिए कि देखिए पहले आपको क्या डेटा गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। देखिए v इज द कटिंग वेलोसिटी, ओके, तो कटिंग वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर मिनट आपको गिवन है। fc is the cutting force, so this cutting force is given to you। F is the frictional force, okay, friction force हमें पता है कि in terms of FC और FT, और by the way हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। Now V is the chip velocity which is not given to you, but we know the relationship that is in between V and VC, so from this from this relationship that is V upon cos pi minus alpha equal to VC upon sin phi, ठीक है। So from this equation we can get the value of VC, so this will be V into sin phi upon cos phi minus alpha, ठीक है। So when you will write this values, this V will be equals to 20 into sin phi, phi is how much, phi we calculated in the first problem, that is 40.2, okay, this is 40.2 upon cos
5 minus alpha. So this is 40.2 minus alpha is how much? 15. Okay, this is 40. So when you will calculate, this value of Vc will be equals to, what I am getting is that is 14.267 meter per minute. Okay. Okay, now this is the value of Vc and we have to calculate the value of F. So जैसा कि मैंने last में किया था, that this numerator, this value is showing this value of F. So ये वाली जो value है, this is 503.768. This is values of F. Okay, so now I'm just putting this over here. So I'm writing over here that is F into Vc upon Fc into V into 100. Okay, that will be equals to F. F is this is 503.768. This is 503.768 into Vc is how much? That is 14.267. Okay, upon Fc is 1200 is given to you and V is 20 is given to you. Okay, into 100 कर दीजिए. So what the value I am getting is this value that I am getting is that is 29.9469, that is in percentage. So the approximate it will be equals to 30%. Okay, so the energy that is dissipated in the friction, so that is 30%, and rest amount, that is 70%, will be dissipated in the shearing action. So the option will be A. Okay, it's clear to you now? Okay, so let's move to the next concept. So that is on the basis of specific energy consumption and specific cutting pressure. देखिए, specific energy consumption, total energy consumption अभी हमने calculate किया है. So if you will divide that total energy or the total power which is dissipated by the how much amount of the volume per unit time is reduced, okay, in a single pass. Now if like okay, total energy consumption means like this is basically the width of this workpiece. Okay, so this is B, and we are choosing that this is a small L length of this workpiece. Okay, so first what we are doing is we are keeping the single point cutting tool over here, and then we are moving throughout this length. Okay, so that in a single pass the whatever the depth of cut, or we can say this is H, or sorry T, this is uncut chip thickness that we chosen. So that will be, that volume will be removed. Okay, but the specific energy consumption, that is I am representing with the U. Okay, and that is nothing but the total energy dissipated per unit time upon total volume removed from workpiece per unit time. Okay, so now first इसको देख लेते हैं हम लोग, that is total energy dissipated. So total energy dissipated, okay, मैं short form में लिख देता हूँ, please confuse नहीं होना, per unit time. ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका, दिस इज लाइक हमने अभी देखा है, दैट इज FC into V. Okay, that is main cutting component, and this is V. So FC is nothing but that is we are always taking in the Newton, and this is in meter per minute or meter per second लिख लीजिए यहाँ पे. So that will be nothing but, okay, ठीक है, watt, आप इसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं और आप इसको वॉट भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो देयर इज, आप कंफ्यूजन में तो होइएगा. So total energy dissipated per unit time, so this will be equals to FC into V. Now the total volume removed from the workpiece per unit time. Okay, so this will be equals to, देखिए short form लिख रहा हूँ, so please no need to confuse, क्योंकि अगर unnecessary वो पूरी चीज लिखनी पड़ेगी. ठीक है, so the total volume removed per unit time. Okay, so total volume removed, मान लीजिए कि आपको इतना ही वॉल्यूम रिमूव करना है जितनी की आपने डेप्थ ऑफ कट ली है. ठीक है, और मान लीजिए कि अगर आप डेप्थ ऑफ कट चेंज भी करते हैं तो आपको
अलग स्लॉट्स में आप उसको कट करेंगे तो लेंथ जोड़ते जाइए, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम उसका निकालते जाइए, ठीक है। सो दैट अगेन यू कैन गेट इट, बट वी आर जस्ट एज्यूमिंग दैट ओके हमें जो हमने ये टी चूज किया है, ठीक है, इतना ही थिकनेस हमें एक साइड में एक बार में रिमूव करना है जिसकी विड्थ ये है और जिसकी लेंथ ये है। तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस वॉल्यूम इज विल बी इक्वल्स टू L into B into T, ठीक है। Now this is the volume and volume per unit time will be I am representing with the V dot, okay, और यहाँ V dot, okay, ठीक है। तो this will be equals to L into B into T per unit time। टाइम को मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नाउ व्हेन हियर वी आर अज्यूमिंग दैट हियर एट द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन व्हेन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वाज हियर, द टाइम v time t will be equals to capital T will be equals to 0 and this at this time the time will be capital T। It means that total length L, small l, is covered during this time slot, so that time covered during this length is t। So what we can define this one, L by T is nothing but it's a velocity, or which velocity? This is horizontal is cutting velocity, so this is V, okay। So this will be L by T, this is L by T, we can go through, we can write this is V, that is cutting velocity, and rest that is B into T is as it is, okay। So this is the total volume removed per unit time, so this will be V into B into T, okay। So this now the specific energy will be equals to the total energy dissipation, that is Fc into V, ठीक है, अपॉन V into B into T, ठीक है। तो ये दोनों कटिंग वेलोसिटीज हैं आपकी, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। व्हाट विल बी रिमेनिंग, दैट इज Fc by B into T, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, ओके। बट देखिए मैंने यहाँ पे आपको देखिए ये कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड कंसेप्ट कि स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर। देखिए टर्म आई कहां से है, ये टर्म आई है इसकी यूनिट से। जब आप इस यूनिट को, ये जो यूनिट है दैट इज अगेन इसको मीटर क्यूब पर सेकंड लिख लीजिए, क्योंकि आपका मीटर से मीटर करना है, या फिर एमएम में भी हो सकता है, या फिर एमएम क्यूब में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, बट वी आर जस्ट हमें जस्ट जो टर्म्स है वो कट करनी है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस वन, ओके। बाय द वे जो आपको गिवन होगा आप उसको 1060 से मल्टीप्लाई करके मैनेज कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो देखिए आपका जो दिस वन, देखिए दिस इज न्यूटन इनटू मीटर पर सेकंड, ओके, and this is meter cube per second, so this is cancel out and this is square will be remaining, so Newton upon meter square, so the unit of this at the end will be Newton per meter square। और आपने इसको ऐसा भी लिखा है that is Newton into meter per second, और आपने इसको ऐसा भी लिखा है that is Joule per second, और आपने इसको वाट से sorry not this one, ये जो आपका है this is this one, this is U basically, so this is represented by the joule per meter cube, okay। So okay इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि this is nothing but joule per second और this is meter cube per second, so this will be cancel out and joule per meter cube will be remaining। तो देखिए आपका जो अब जो इसकी टर्म आ रही है, यूनिट आ रही है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है आपका, पास्कल। अगर मान लीजिए कि आप मीटर एमएम स्क्वायर में लेते तो मेगा पास्कल बनता, किलो पास्कल बनता, कुछ ना कुछ बन जाता है, ठीक है, या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेगा पास्कल बन जाता, ठीक है। सो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। बट आपने निकाला क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो यूनिट है अगर कहीं पास्कल की आ रही है, देन इट मींस देयर इज सम प्रेशर इन्वॉल्वड इज देयर, ओके। तो ये प्रेशर इन्वॉल्व क्या है, फॉर दैट आई एम चेंजिंग दिस स्क्रीन, दैट इज लाइक देखिए इनिशियली ये फाइनल जो बिट था आपका, तो मैं इनिशियली यहाँ पे भी कुछ बिट्स ले लेता हूँ और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये वाला आपका डिस्पोज, देखिए इसमें क्या एक समझाना थोड़ा आप आसान होगा और आप इजी से समझ जाएंगे इसमें, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इन दिस फिगर इटसेल्फ, अदरवाइज वी कैन मेक अदर फिगर, नो इशू, देयर वोंट बी एनी इशू, ओके। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि आपका जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ना, वो आपका इनिशियली यहाँ पे जब आप उसको होल्ड करेंगे दैट टू रिमूव द मटेरियल, सो वी आर moving in this direction, so if we are moving in this direction it means that this complete cross sectional area will be in contact on this Fc, which is the main cutting force,
which is applied over this cross sectional area. So which cross sectional area it is? This is B and this is uncut chip thickness, that is T. So this B into T over this cross sectional area, the FC will be applied. Okay, so that's why the cutting is takes place in this direction over this cross sectional area. So now you can see from this side as well that FC is the cutting force which is applied over this cross sectional area. This cross sectional area is nothing but that is B into T. ठीक है, तो आई थिंक बोथ द थिंग्स आर क्लियर टू यू। देखिए अब इसमें एक एप्लीकेशन है तो वो क्वेश्चन के साथ भी आएगी तब भी हम देख सकते हैं, बट लाइक दैट इज उसको हम स्टैंडर्ड बना ले तो ज्यादा अच्छा है। देखिए हमने देखिए यू आ क्या रहा है, दैट इज एफ सी अपॉन बी इंटू टी, ठीक है, और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, दैट इज एफ सी इंटू बी अपॉन बी इंटू टी से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप इससे याद करते हैं तो आपने हमने लास्ट जो एक वीडियो किया था उसमें जो मैकेनिक्स ऑफ मर्चेंट थ्योरी वाला था, आई थिंक लास्ट वीडियो है, तो उसमें हमने कन्वर्जन किया था कि लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिक्स इन द टर्निंग ऑपरेशन, हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द ऑर्थोगोनल। तो हमने क्या किया था कि B को कन्वर्ट किया था D में, दैट इज डेप्थ ऑफ कट में, और T को कन्वर्ट किया था फीड में। ओके, सो फीड में जब कन्वर्ट किया था दैट वाज दैट इज T equals to F into sin lambda and B that is bit will be equals to D upon sin lambda. D is depth of cut, okay, lambda is the approach angle and F is the feed, ठीक है। Now when you will put this B and T value over here, so this B into T will be equals to F into D, क्योंकि upon sin lambda and sin lambda that will be cancel out. So from this basically आप specific energy consumption you can get the value of this one for the turning operation, and in the turning operation B and T is not given to you, but on behalf of that F and D is given to you. So if in case if you are using this concept specific energy consumption in for the turning operation, then we can use this formula directly. Okay, so actually we have to make this standardized, that's why I was doing this one. So you can write these formulas in your synopses. Okay, this will be very helpful. Okay, so our last question देख लेते हैं, then we'll end this session. So in orthogonal turning of medium carbon steel, the specific and machining energy, okay, is 2 joule per meter cube. देखिए स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी का मतलब है कि मशीनिंग मतलब आपका कुछ मटेरियल रिमूवल हो रहा है, ठीक है, मटेरियल रिमूव हो रहा है, देन इट्स डिसिपेशन। ओके, सो दैट इज अ स्मॉल u इज गिवन टू यू डायरेक्टली, सो दिस इज स्मॉल u विल बी इक्वल्स टू 2.0 जूल पर mm क्यूब। ओके, द कटिंग वेलोसिटी फीड एंड डेप्थ ऑफ कट आर, मतलब कटिंग वेलोसिटी जो है दैट इज 120 मीटर पर मिनट, सो दिस इज 120 मीटर पर मिनट। Okay, and feed that is F is given to you, that is 0.20 mm per revolution. Okay, and depth of cut that is small d is given to you, that is 2.0 mm. Okay, by the way 2 I'm just writing 2.0 mm respectively, ठीक है, तो हमने ये respectively लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। So the main cutting force in Newton, देखिए अब okay, हमें तो अभी डिराइव किया ही है। So this u will be equals to, देखिए अब डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला अब हमने डिराइव कर लिया तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, b into d और fc upon f into d से आप कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि आप ऐसा सोचते हैं कि ये जो v है ये पैरामीटर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। u की जो आपको बेसिकली देखिए जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था दैट टाइम नोबडी वाज डिस्कसिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो देखिए अगर मान लीजिए कि आपने भी अगर मान लीजिए कि ये फॉर्मूला डिराइव नहीं किया है, बाय द वे यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम दिस फॉर्मूला एंड हम इससे कर भी सकते हैं, ठीक है। बट मान लीजिए कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट टाइम दिस फॉर्मूला वाज नोबडी वाज डिस्कसिंग दिस फॉर्मूला, तो मान लेते हैं कि आपका स्पेसिफिक एनर्जी जो है, हम अब यूनिट के बेसिस पे जाते हैं, ठीक है, तो यूनिट के बेसिस पे जब जाएंगे सो दिस u विल बी इक्वल्स टू दैट इज 2.0 जूल पर mm क्यूब, ठीक है। mm क्यूब है तो जूल क्या होता है आपका, न्यूटन इंटू मीटर, और mm कर लीजिए, ठीक है, और नीचे क्या है mm क्यूब और mm स्क्वायर, सो दिस इज स्क्वायर विल बी कैंसल आउट। नाउ दिस इज
2.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो जिसने जब ये फर्स्ट टाइम पूछा गया था, दैट टाइम अगर इफ एनीबॉडी हैज फोकस्ड ऑन दिस पार्ट, देन आल्सो दिस थिंग्स कैन बी मैनेजेबल, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो हम उससे फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज 2.0 विल बी इक्वल्स टू एफसी हमें कैलकुलेट करना है। F जो है that is 0.2 mm per revolution and value of D is 2. So this is FC will be equals to that is 2। देखिए ये जो था that is 2 that is in Newton that is in Newton into meter होता है, ठीक है। So अगर क्योंकि यहाँ पे आपका mm क्यूब है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। So you have to multiply with 10 raised to power 3 that will become Newton into mm, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात को। So when you will multiply, this will be 10 raised to power 3 over here. So this will be 2 into 10 raised to power 3 into 0.20 into 2. So when you will calculate it, the value will be equals to 800 Newton. Okay. So option D will be the answer. Okay. So thank you so much guys for joining this lecture, and see you soon.